र असार 15 यो हाम्रो गाउँले जनजीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन हो। यसमा हामी खेतीवालाहरू चाहिँ धानसँग विशेष हाम्रो महत्त्व छ। जन्मेदेखि मृत्यु संस्कारसम्म यो धानको उपयोगी हामी पाउँछौँ, तसर्थ यो धानलाई हामी एकदमै महत्त्व दिन्छौँ। र आजको दिन असार 15 हो र असार 15 दिन विशेष गरेर हामी धान रोपनी गर्छौँ। र यहाँ बेठी लाउने चलन पनि पौराणिक कालदेखि नै भएको हो र बेठी लाउँदाखेरि एउटा रमाइलो हुने प्रथा छ। हुन त कुनै पनि काम गर्दा सङ्गीत चाहिँ आउँछ नै आउँछ, जस्तै फापर रोप्दा होस्, कोदो रोप्दा होस्, दाइँ गर्दा होस्। र यसमा जुन चाहिँ बेठी छ यो चाहिँ धान रोपनीसँग सम्बन्ध छ। असारे गीत गाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ भाका छ यसलाई चाहिँ रसिया भाका या असारे भाका भन्ने चलन छ। यहाँ चाहिँ नारी र पुरुष वर्गको बिचमा जोहारी जस्तो हुने गर्छ। जसरी यहाँ अहिले गाइँदैछ, जसरी यसमा विरहका गीतहरू पनि गाउने जस्तो तपाईँलाई एउटा गीत गाएर म गीतमा प्रस्तुत गर्न गर्छु। जस्तै हिमालय चुली त्यो पल्लोपट्टि चरीले टेकेको, आमाले होइन बाबुले होइन भाबीले लेखेको, जुन ठाउँमा जन्मिन्छ जस्तो ठाउँमा जन्मिन्छ त्यसरी नै उसले भोग्नुपर्छ भनेर यसरी नै। अनि जुहारी खेल्दा खेल्दै कतै कतै माया प्रीति लाग्ने पनि हुन्छ। तसर्थ बाबुसेले भन्ने गर्छन्, सिरियोलुको खिरिलो हाँगा चरीले टेकेको, आमाले होइन बाबुले होइन भाबीले लेखेको भन्दै अर्कोले भन्ने गर्छ कि मकैला खानु करेक र कुरुक, सुपारी कुटुकै, आइतोले 12 पैताले 17, सोमबार जाउँ सुटुकै भनेर यस्तो खालको प्रेम प्रसङ्ग पनि यहाँ दोहोरिने गर्छ। समय सापेक्ष औजार र उपकरणको विकास गरेर बेरोजगार युवाहरूलाई आधुनिक तकनिकको प्रयोग गर्दै कृषिको क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले राज्य सरकार विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ। सरकारको उद्देश्य कृषिको क्षेत्रमा नयाँ औजारसितै आफू लगायत सम्बन्धित विभाग संलग्न भएर लगनशील र उद्यमी कृषकहरूलाई आफ्नो खेतीमा अझ आकर्षित गर्नु हो। यस उद्देश्यले हालै खामदोङ स्थित खेतमा आयोजित असार 15 कार्यक्रममा सिक्किम सरकारको कृषि विभाग मन्त्री श्री लोकनाथ शर्मा, क्षेत्र विधायक एवं स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर MK शर्मा, परिवहन विभाग मन्त्री श्री सञ्जित खरेल लगायत कृषि एवं बागवानी विभागसम्मको उपस्थितिले समस्त कृषकहरूमा विभिन्न प्रकारको खेती गर्ने जोश र उत्साह प्राप्त भएको देखिएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो ऐतिहासिक कामहरू सिक्किममा अहिले वर्तमान सरकार जो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार भएपछि आज मलाई पनि यो विभाग कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा मौका दिएको कारण हाम्रो एउटै कोसिस छ, सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्री महोदयदेखि लिएर गएर सम्पूर्ण हाम्रो सरकारमा हुनुहुने हाम्रो डिपार्टमेन्टदेखि लिएर सबैजनाको एउटै एउटा मकसद हो। यो असार 15 भनेको एकजना धानको खेती लाउने दिन, दही चिउरा बसेर खाने दिन, अनि आनन्दसँगले धान रोप्ने, अनि जुन धान रोपिन्छ त्यही धान फलेपछि भोलि गएर हाम्रो जिन्दगी चल्ने कुरा हुन्छ। र हाम्रो एउटै मकसद हो सम्पूर्ण सिक्किमका हाम्रो बेरोजगार भाइ बहिनीहरू अनि सम्पूर्ण हाम्रा जति पनि खेती किसान गर्नुहुने आदरणीय जनता जनार्दन हुनुहुन्छ। अबको संसार भनेको जसले खेती गर्छ, जो मान्छेले कमाइ गर्छ, गाई बाख्रा सुँगुर पाल्छन् अनि यसरी धानको खेती अरू अन्नको खेती लगाउँछन्, उहाँहरूको भविष्य अवश्य पनि एउटा भविष्य एकदमै राम्रो छ। किनभने यस्तै प्रकारको अहिले कोरोना भाइरसको कारणले संसारमा यति बेसी खाद्यान्नको अभाव, मानिसहरूले काम गर्न नसकेको, तर आज हाम्रो सिक्किममा आज ग्रिन इकोनोमी जो सिक्किम अर्ग्यानिक भनेर आज यहाँको खेती उत्पाद जे पनि हुन्छ अर्ग्यानिक हुन्छ। यदि हामी सबैजना मिलेर आफ्नो भएको बारी खेतलाई प्रयोगमा ल्यायौँ, खेती गऱ्यौँ भने भोलि सिक्किमको GDP जुन अर्थव्यवस्था छ, जुन ग्रिन इकोनोमी भनेर हामीले स्लोगन दिएका छौँ, यो बढ्नेवाला छ। अर्को कुरा, जहाँ खेती गरिन्छ त्यहाँ गाई बस्तु हुन्छ, किनभने मल चाहियो। र वर्तमान सरकारले हामीले अहिले कृषिको क्षेत्रमा कृषिको सब्सिडी लोन, गाई बाख्रा बस्तु सुँगुर जुनै पनि पाल्नुको लागि हामी सरकारले ब्याङ्कसँग मिलेर किसानलाई एउटा सब्सिडाइज रेटको लोन दिलाउने, कम्तीको इन्ट्रेस्ट लागतको लोनहरू दिलाएर खेती गर्नुपर्छ। अनि खेती नै एउटा यस्तो खालको शक्ति हो जहाँबाट हाम्रो जिन्दगी चल्छ। हामी नोकरी गर्ने पक्षमा छौँ, नोकरी गर्नेले पनि भात खानु पर्यो, नगर्नेले पनि खानु पर्यो। अन्तमा गएर
यो पेसा जुन खेतीको पेसा छ यसलाई सबैले अपनाउन् भनेर आज सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय पनि आउनुहुने थियो, तर नर्थ सिक्किममा एउटा भवितव्य भयो जो फासिङदाङमा धेरै घरहरू बेघर भएका छन् अनि उहाँ उँभो गएर हामीलाई यहाँ पठाउनु भएको छ र उहाँको तर्फबाट पनि मुख्यमन्त्री महोदयको तर्फबाट अनि हाम्रो सम्पूर्ण विभागको तर्फबाट हामी आज असार 15मा यही आह्वान गर्छौँ, आउँ हामी सबै मिलेर आधुनिक तकनिकी मेसिनहरू लिएर हामीले खेतमा डिस्प्ले गऱ्यौँ ताकि कम्ती तागतमा धेरै उब्जनी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा स्लोगन हो। यसै कारण यो इतिहास हो। तर आज भव्य रूपमा हामी यसरी किसानहरूलाई सम्मान दिनको लागि, उहाँहरूलाई उत्साह जनाउनको लागि, सरकारको योजनाहरू बाँड्नका लागि हामी यसरी आफै खेतमा आएर दाँदे लाउने, फ्याउरी लाउने, खेत रोप्ने काम गरेको। जहाँ पनि हामीले काम गर्छौँ भने मैले काम गर्नु पर्यो भनेर एकदम करले काम गऱ्यो भने त्यहाँनिर कहिले पनि मजा आउँदैन। यसरी उत्साहसँगले हर्षोल्लासको साथ सबै नौमती बाजा बजाउँदै हामी नाच्दै गाउँदै खेतमा यो खेत रोप्ने काम सुरु गरेका छौँ। यसले एउटा हाम्रो नौजवान साथीभाइहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई पनि ठुलो अवश्य नै उत्साह दिनेछ। सरकारले, हाम्रो विभागले धेरै आधुनिक तकनिकी यन्त्रहरू तयार छ, जस्तै पावर टिलर, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो धान रोप्ने मेसिन छ, अन्य जोत्ने मेसिन छ। त्यहाँदेखि भएन एउटा टेक्नोलोजी लगाएर कम्ती खर्चमा, कम्ती मेहनतमा धेरै उत्पादन गर्ने हामीले साधनहरू तयार गरेका छौँ। अवश्य पनि यसले हाम्रो आउने पिँढीलाई फाइदा दिनेछ। अहिले विशेष गरी यो कृषिको क्षेत्रमा युवाहरूको सहभागिता हामीले धेरै नै कम देख्ने गरेका छौँ अनि यो युवाहरूलाई कृषिको क्षेत्रमा प्रोत्साहित गर्नको निम्ति सरकारले विभिन्न योजनाहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउँदै आइरहेको छ। अनि यस्तोमा आज हामी खामदुङ सिङतामको क्षेत्र अन्तर्गत यो खामदुङमा असार 15 कार्यक्रमको यस अवसरमा आइपुग्दाखेरि हामीमाझ एकजना देवी प्रसाद सुवेदी, एक युवा शिक्षित कृषिलाई अपनाउने व्यक्ति हामीमाझ हुनुहुन्छ। उहाँले के कस्ता भोगाइहरू भोग्नु भएको छ यो कृषिको क्षेत्रमा अनि उहाँ एक स्वनिर्भर अनि कृषिलाई अपनाएर आफूले मतलब स्वयं रूपमा बाँच्ने अनि अरूलाई पनि आफूले उब्जाएका कुराहरू बेच्ने गरेको हामीले देख्न पाएका छौँ। अनि उहाँले कसरी यो कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु हुँदैछ, के मेहनत छ, के कुराहरू छ, उहाँले हामीमाझ जानकारी प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, तपाईँ एक युवा कृषक हुनुहुन्छ अनि तपाईँले के कस्ता भोगाइहरू भोग्नु भएको छ यो कृषि क्षेत्रमा? कतिको पहिलाको तुलनामा अहिले के कस्ता मतलब उतार चढाउहरू, मतलब अप्स एन्ड डाउन्सहरू आइरहेका छन्, साह्रो कठिनाइहरू आइरहेका छन्, के तपाईँले के भोग्नु भएको? पौराणिक हिसाबको जुन खेती गराइमा र अहिलेको मतलब आजको स्थितिलाई हेर्दाखेरि यसको तुलनात्मक हिसाबले हेर्नु हो भने आज धेरै सहज हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभने हाम्रोमा अब यस्तो छ, पहिला चाहिँ अब हाम्रो पिता पुर्खाहरूले चाहिँ परेली हिसाबले खेती किसान गर्नुहुन्थ्यो है। आज अब पर्याप्त मात्रामा कति ठाउँ गोरुहरू पाउन सकिँदैन, कति ठाउँ हाम्रोमा खेतालाहरूको पनि कमी हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई हेरेर चाहिँ अहिले मोडर्न टेक्नोलोजी जो हाम्रो पावर टिलरको डेमोन्स्ट्रेसन हुन्छ, पावर टिलर हामी चलाउँछौँ है, थुप्रो औजारहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ खेतीलाई धेरै सहज हुन्छ। अनि अहिले आधुनिक ढङ्गमा खेती गर्दा चाहिँ जो पौराणिक हिसाबको तुलनामा चाहिँ सानो एरियामा पनि हामी ठुलो खेती गर्न सक्छौँ, धेरै हाम्रो उब्जनी बनाउन सक्छौँ। जसमा हामी पावर टिलरलाई युज गर्छौँ, जसमा लेबर अलिकति कम्ती लगाएर अनि मेन्युरमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने मेन्युरहरू हाम्रोमा र मेन्युर युज गर्नुभन्दा, चलाउनुभन्दा चाहिँ हामीलाई रोटन मेन्युर जस्तो हाम्रो माध्यम कम्पोस्टबाट बनिएको मेन्युर है, FYM को कम्पोस्ट मेन्युर, त्यहाँबाट हाम्रो भर्मी टेक्नोलोजी भर्मी मेन्युर, यस्तो चिजहरू जब लगाउँछौँ त्यसो गर्दा चाहिँ त्यो खेतीमा उर्वरा शक्ति अलिक आउँछ, जमिनमा अलिकति त्यो हाम्रो सूक्ष्म कीटाणुहरूलाई पनि काम गर्छ, उर्वरक हुन्छ। त्यसरी नै हामी त्यो चिजहरूलाई अपनाएर हामी काम गर्दैछौँ। पौराणिक परम्परा अनुसार रोपाई अथवा धानको खेती सुरु गर्न अघि ईश्वरसित आज रोपेको धानको खेती फस्टाएर जाओस् अनि अन्नबाली सप्रियोस् भन्ने कामना गर्दै मन्त्रीगण लगायत अधिकारीगणद्वारा यहाँको पानी उम्रिने मुहानमा पूजा अर्चना गर्दै
दर्शकवृन्द हामीमाझ कृषि विज्ञान केन्द्रका अधिकारी महोदय पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो कृषि विज्ञान केन्द्रबाट कृषकको लागि के कस्ता योजनाहरू छन्, के कस्ता कार्यक्रम प्रोग्राम्स पोलिसीजहरू छन् यसबारेमा बताउनुहुनेछ। सर, स्वागत है आपको आईपीआर में। थैंक यू सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर प्रशांत कुमार पाठक। सर, तो कृषि विज्ञान के तरफ से कृषक लोगों के लिए उन लोगों को मतलब कृषि में और प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स पॉलिसीज वगैरह है? देखिए, हम लोग कृषि विज्ञान केंद्रों का मतलब तो आप लोग जानते होंगे। देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक कृषि विज्ञान केंद्र है। जो कृषि विज्ञान केंद्र पूरा ऑल ओवर इंडिया में 710 जैसा है, और सिक्किम में आप लोग का सारो डिस्ट्रिक्ट में सार है। जो इस सिक्किम का कृषि विज्ञान केंद्र है, जो नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च जो टाडोंग में उसका अंदर होता है, और बाकी आप लोग का टीनी डिस्ट्रिक्ट में 3 है। कृषि विज्ञान केंद्र काम करता है जो रिसर्च स्टेशन में जो टेक्नोलॉजी जनरेशन होता है, न्यू टेक्नोलॉजी आता है, वो हम लोग फार्मर्स फील्ड में लेके जाते हैं। मान के चलिए कोई टेक्नोलॉजी राजस्थान में सक्सेस हुआ, कोई पंजाब में हुआ, इधर नहीं भी हो सकते हैं, तो हम लोग वो टेक्नोलॉजी ला के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फार्मर्स फील्ड में हम लोग ट्राई करते हैं। अगर सक्सेस होगा तो हम लोग उसको डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब वो मास अवेयरनेस जनरेशन के लिए। शायद बहुत आदमी आके देखे जो सचमुच उसमें फायदा हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी हम लोग हर तरफ का करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक मतलब पोल्ट्री एंड होम साइंस है, सबका है। हम लोग का एग्रोनॉमी है, जो इसका प्लांट ब्रीडिंग है, नया नया वेराइटीज़ का भी हम लोग ट्रायल करते हैं। तो वो ये है, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं फार्मर्स को, फार्मोमेन को, इवन हमको एक्सटेंशन फंक्शनरीज को भी ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग का स्कीम रहता है कभी कभी, जैसे ट्राइबल सब्स प्लान बोल के एक है, जिसमें हम लोग फार्म मंगाते हैं, तो ट्राइबल बेनिफिशियरी सुनते हैं, तो हम लोग को नया नया टेक्नोलॉजी मान के चले पिक फार्मिंग का कैसे किया जाता है, हम लोग उसको एकदम डिट्टो जैसे होता है रिसर्च सेंटर में वही दिखाते हैं, और उन लोग करने के हम लोग मदद करते हैं, जैसे आप ऐसे ही करो। और उसके बाद होने से हम लोग उसको आपका मीडिया का तरफ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको हम लोग दिखाते हैं। ये टेक्नोलॉजी सिक्किम के कारण बहुत बढ़िया हो सकता है, उसको हम लोग अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसे ही है। और डिफरेंट क्या निकरा बोल के एक है प्रोजेक्ट है हम लोग का, जैसे नेशनल क्लाइमेट रिजिलेंस, जैसे अभी टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, बारिश हम लोग का पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इससे कारण जो इफेक्ट हो सकता है खेत में, उसको हम लोग मिटिगेट करने के लिए, मतलब उसको रोकथाम करने के लिए, तो कैसे उसको क्लाइमेट को मतलब चेंज हुआ क्लाइमेट को देखते हुए क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आता है, उसमें वही प्रोजेक्ट में हम लोग वही डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो यही टाइप का है। सर, तो प्लेन साइड और हिली साइड में क्या फ़र्क है, मतलब ये औजार जो चलाने के लिए? अच्छा, देखिए, ये हम लोग का जो औजार का है ना, इम्प्लीमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, इसका मेन काम है हम लोग का, देखिएगा आपको लेबर फोर्स बहुत कम मिल रहा था। धीरे धीरे एग्रीकल्चर में बहुत फोर्स कम हो गए थे। हाँ, भले ही अभी कोरोना के कारण बहुत आदमी वापस आए हैं हर स्टेट में, शायद उन लोग खेत में लगेगा आने वाला टाइम में। औजार से क्या होता है, हम लोग का मैन पावर कम मैन पावर से होता है, कम टाइम में हम लोग ज़्यादा खेत कवर कर सकते हैं, और उसमें हम लोग ढेर सारा इक्विपमेंट्स है। जैसे प्लेन का बात है, प्लेन में बहुत बड़ा हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे कॉमन हार्वेस्टर एक साथ हार्वेस्ट कर लेते हैं पूरा खेत। बिग जो है आपका ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, बिग साइज का किया जाता है। ट्रांसप्लांटर, राइस ट्रांसप्लांटर का भी बिग मशीनरीज यूज़ किया जाता है। लेकिन सिक्किम हिल में हम लोग का टेरेस फार्मिंग है, इसमें इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोग का अच्छा बात है, सिक्किम में जो है ना, रानीपुल में सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें उन लोग अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाया है। तो कुछ उन लोग भी डेमो दिया, लेकिन जो पॉसिबल है छोटा इक्विपमेंट जो हम लोग टेरेस फार्मिंग में कर सकता हूँ, उसको हम लोग लेके आए हैं आज। मतलब सर, यहाँ पे जो मतलब आप लोग अभी तक जो औजार लेके आए हैं, वो कितना लाभदायक हुआ है सिक्किम में बेसिकली? देखिए, औजार का तो लाभदायक है ही बहुत है, लेकिन क्या होता है आदमी का माइंड सेट का एक बात है, उसको हम लोग सेंस करने में टाइम लगता है। आदमी इमीडिएटली इक्विपमेंट्स को आप लोग नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, उन लोग तो जैसे पुराना जो बेल है उससे चलाने की कोशिश करेंगे, तो टाइम लगता है। जो आदमी एक बार एडॉप्ट किया, उन लोग देखा जो बहुत अच्छा हो रहा है, उन लोग तो एडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग उसके लिए हम लोग सबको हम लोग मिल के काम करना है, जिससे हम लोग कुछ ना कुछ एटलीस्ट फायदा मिले फार्मर्स को। कम टाइम में हो जाए हम लोग का काम, बहुत सारा काम हो जाए, इफेक्टिवली हम लोग का प्लाउइंग हो जाए, और डिफरेंट मैकेनाइजेशन जो है फार्म्स का, वो इंटर कल्चरल ऑपरेशन, वीडिंग वगैरह हो जाए, उसका ढेर सारा इक्विपमेंट्स है, उसको एडॉप्ट करना चाहिए। इवन वैल्यू एडिशन का बात है, उसमें ढेर सारा मशीनरीज है, जिसमें हम लोग वैल्यू एडिट करने से, हम लोग ब्रांड डेवलप करने से, तो अभी हम लोग का सिक्किम जो ऑर्गेनिक मिशन का जो मकसद है पूरा हो पाएगा, तो अभी फायदा मिलेगी। राज्य सरकारका विभिन्न कार्यक्रम र योजनाबाट सिक्किम लगायत राज्यवासी स्वनिर्भर बन्दै गइरहेका उदाहरणका साथै यस्तै प्रकारका कार्यक्रमहरू लिएर तपाईहरू सामु फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ।